Hello students, this is Swati Deshpande teacher. Today we will be taking one more important topic from 5th standard IT section. The name of the topic is term that belongs to a set. Today we will be concentrating on figures. We have done all other chapters from this particular topic, that is the term that belongs to a set. I will give you the links in the description box. Please check it. Okay? चलो start करते हैं. Term that belongs to a set. The name itself tells you what is it. They will give you a set. Set means what? Everything of same type. You need to find out from the options given which one belongs to that particular set or which one is similar to that whatever has been given to you. Okay? चलो start करते हैं so you will get a better idea. Concentrate on this. See, there are 4 symbols given, right? In each this into multiplication sign or x, they have given 4 symbols. Here what is important is the movement. किसके बाजू में क्या है? पहले movement fix करो. Anti clockwise, clockwise or anti clockwise. Now I am concentrating on clockwise movement. I am taking this circle as a base and I am moving in clockwise direction. Circle, triangle, plus, minus. Here circle के पास जाती हूँ. Again clockwise. Circle, triangle, plus, minus. Same thing. Here again circle, clockwise. Circle, triangle, plus, minus. So this is a order. Circle, triangle, plus, minus. Movement is clockwise. You have to stick to that movement. Again here. Circle, triangle नहीं है. So ये नहीं. Circle, plus. ये नहीं है. We are moving like this. Circle, triangle, plus, minus. Yes, this is the one. Just with that rhythm I have come to know. Circle, triangle, plus, minus. Only thing is I have to move like this. If by mistake I move like this, then my answer will change. Circle, triangle, plus, minus. नहीं है. So ये third is the correct option. Here, second one. Here they have given the water reflection of the top figure. See, there is one line. ऊपर एक फिगर है, नीचे एक फिगर है. ऊपर फिगर जो है उसका water reflection they have given down. Observe. Water reflection में क्या होता है? Whatever is on top, right at the top, goes down, or whatever is down comes up. उल्टा, right? Same way, ये dark जो है, ये नीचे गया है. ये ऐसा वाला जो ट्रायंगल है वो नीचे गया है. वर्टेक्सिस, राइट? वर्टेक्स ये जो था वो नीचे गया है. लाइक दिस. ये जो था ऐसे मूवमेंट दैट हैज गॉन लाइक दिस, राइट? सो इट इज अ वाटर इमेज. So we need to find out if all 3 are water image. Obviously the answer also should be a water image. ये water image नहीं, ये तो same है. ये भी water image नहीं है. This is a water image. See, this was right on top. Left and right does not change. So this was in the right top. It has gone down, right down here. This was left down. So it has gone left up, left side up. So this is a water image. Left and right does not change. Whatever is in the right will remain in the right only. Okay, in water image. Next one here. 3 things are given. Here your job is to make everything in a vertical position like this. इसको भी ऐसे imaginary घुमाओ, नहीं तो paper घुमाओ. You have a liberty of moving the paper. And see, अगर paper concentrate only on this, ऐसे पेपर मूव करो, इसको सीधा करो ऐसे, एंड देखो ये सर्कल वाला पहला है क्या ऊपर, ये लाइन डाउन है क्या, ये कर्व ऊपर है क्या. इट शुड लुक एग्जैक्टली लाइक दिस. इफ आई मूव लाइक दिस, इट इज लुकिंग एग्जैक्टली लाइक दिस. ये मूवमेंट ऐसे करो, ये इजी रहेगा. ऐसा पूरा घुमाने से, हियर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज से कुछ मतलब नहीं है. यू हैव टू ब्रिंग इट हियर. ये सर्कल वाला पहले लाना है. सो मूव इट लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस. ये पहला खट इधर, बाद में ये नीचे वाला, और ये सेम लाइक दिस. सो फ्रॉम दिस ऑल्सो वी नीड टू फाइंड आउट द फिगर. इफ वी मेक इट वर्टिकल लाइक दिस, it should be exactly identical.
अगर इसको मैं सीधा करती हूँ ऐसा, तो ये पहला आएगा, सर्कल वाला पहला नहीं आएगा, तो ये गया। अगर इसको मैं ऐसा घुमाऊं तो ये पहला आएगा। इमेजिन, और लिटरली यू मूव द पेपर, इट इज अलाउड। ओके, you have the paper in your hand or book in your hand. Board I cannot move, but you have a liberty of moving the book or the paper at the time of examination. Move it. ये अगर मूव करते हैं तो ये पहला आएगा ऐसे, बाद में ये नीचे और बाद में ये कर्व वाला ऊपर. So this is the answer. Just by imagining the movement of the figure given, the identical to this, all three are identical when we bring them in the same position. So problem is solved. Just the movement of paper has given us 2 marks. Next one, figures are given. When figures are given, first try to find out how many sides are there. This is pentagon, 5 sides. Triangle, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, septagon. So we can see they are odd. Odd प्राइम, एनीथिंग कैन बी. सो इसमें कितने लाइंस हैं? 1 2 3 4 5 6 तो आउट ऑफ क्वेश्चन. ऑड भी नहीं है और ये प्राइम भी नहीं है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10. सो ये भी इवन है, गॉन. 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सागन है. 6 7 8 9 9. 1 2 3 4 5 6, ये भी इवन है. So this could be the answer. I mean third one. This is the answer. Because बाकी 3 तो even है. Even तो out of question. ये तो odd है. Prime का इधर नहीं है concept. At this time ये जब भी देखा था हमें पता नहीं कि इधर prime का भी दे सकते थे. लेकिन इधर 9 दिया है तो it could be odd का है. ठीक है, odd है तो मिला है हमें odd. 9. So third is the option. Just counting the lines, so easy, isn't it? Just counting the lines has given us solution. So I tell you, the actual working will be easy. Only thing is you have to observe the figures given. Okay? एक का दूसरे में कैसे conversion हुआ है, क्या changes हुए हैं. So you have to follow the same thing. Okay? चलो आगे बढ़ते हैं. Students, observe this. First sum here. They have given certain standing lines, certain curves. What can be the solution? See, first thing that comes to our mind is how many standing lines are there, how many curves are there. Let us count that. It won't take more time. Standing line कितने हैं? 2. Curves कितने हैं? 2. 2 2 मैच हो रहे हैं. इधर देखो, standing line 1, curve 1 मैच हो रहे हैं. इधर 3, कर्व भी 3. सो मे बी दैट स्टैंडिंग लाइन जितने हैं उतने ही कर्व होना जरूरी है. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग इन दिस पर्टिकुलर सेट. सो लेट्स सी. इधर 3 लाइंस 4 कर्व्स, नो. 2 लाइंस 3 कर्व्स, नो. 4 लाइंस 3 कर्व्स, नो. 4 लाइंस 4 कर्व्स. सो हियर लॉजिक इज सेम. स्टैंडिंग लाइन जितने हैं उतने ही कर्व्स हैं. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट वन, ऑब्जर्व दिस. व्हाट आर these letters? Is this English? No, this is IT. So it could be, when it comes to letters, first thing you should check is the symmetry. Symmetry मतलब अगर हम लोग उसका हाफ करते हैं स्टैंडिंग लाइन से, नहीं तो स्लीपिंग लाइन से, it breaks into 2 identical parts. Here I am cutting it horizontally like this, like this, like this. So बराबर हाफ में डिवाइड हो रहा है. So they are symmetrical figures. So अगर see when I am doing it with horizontal lines, I cannot do it vertical. See, I can do vertical. No, horizontal ही करना है. कौन सा है? ये है, ये और ये identical. So this is the correct option. Here I have drawn line ना. I will draw it dotted, नहीं तो confusion हो जाएगा. Okay? So here x
Just on the basis of symmetry we have found the answer. Isn't it easy? Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. Here they have given closed figure. Inside again there is some figure. So we don't know what it is. Trial and error is the main thing. Okay. So count करो. Triangle मतलब 3 साइड अंदर है, सॉरी बाहर है, अंदर 2. बाहर कितना है 4, अंदर 3. ट्राइंगल है तो बाहर कितना है 6, अंदर कितना है, ये पेंटागन है, सो 5. सो इफ यू ऑब्जर्व आउटसाइड देयर आर जितने लाइंस है, देयर आर सो मेनी लाइंस आउटसाइड. इफ वी minus 1 from that, whatever number we get, these many lines का figure is inside. Okay, so outside figure has one side more than inside figure or lines, whatever it is. Here there is no figure, there are lines. Whatever it is. This is not geometry. This is IT again. So here we need to find out ऐसा outside का figure जिसका lines is one more than inside का figure. So obviously ये हो नहीं सकता. This is pentagon 5 और अंदर वाला है 6. सो नहीं. कभी कभी बच्चे लोग ये सिलेक्ट कर देते हैं, एक ज्यादा है लेकिन ज्यादा नहीं मांगता अंदर का एक कम मांगता है. सो जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जाती है. बी केयरफुल. वेयर वी वांट वन मोर आउटसाइड फिगर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज दिस. व्हाट इज दैट? ये तो क्लोज फिगर है ही नहीं, तो ये तो आ ही नहीं सकता है. नेक्स्ट वन पेंटागन. सो 5 इनसाइड, आउटसाइड, 4 inside. See, 1 less every time. ये बाहर, अंदर का इधर लिख रही हो, बाहर का इधर लिख रही हो. So this should be the answer. Here the outer figure is of 6 and inside it is 4. So no, 2 से कम नहीं मांगते, 1 से ही कम. Isn't it easy? Senior KG level क्या है? Identify the figures, how many sides do they have, and find out the answer. So easy. I tell you, the logic will be very easy. Only thing is you have to observe क्या है. अगर वो observation होता है बराबर, तो arriving at answer is not a problem at all. And how can you achieve this? By practice. जितना practice करोगे बच्चे लोग, उतना comfort zone में आओगे. Believe me. Okay? चलो आगे बढ़ते हैं. Students, observe this one. What have they given? This curve is there and this small curve and this small curve. Right? एक बड़ा curve दिया है, दो छोटा दिया है corner पे, end पे. Right? So it is nothing but the direction of the curve. I would suggest you bring everything. सबको ऐसे move करो और ऐसे लाओ. Move the paper and imagine. अगर ये सब ऐसे फेसिंग दिस साइड अगर हम लोग लाते हैं, तो ये ऊपर वाला कर्व ऐसा ही होना चाहिए, नीचे वाला कर्व ऐसा ही होना चाहिए जैसे ये है. अगर वो सेम है तो वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम द ऑप्शन ऐसा ही सेम वाला. ओके, सो ये मूव करो पहले. यू विल नो इफ यू मूव द दिस कर्व लाइक दिस, इट विल लुक एग्जैक्टली लाइक दिस. फर्स्ट वन सेम थिंग. अगर ये ऐसा थोड़ा मूव करो तो ये ऊपर आएगा ऐसे ही और ये नीचे आएगा. सेम, दे आर आइडेंटिकल. ओनली थिंग इज दे आर प्लेस्ड डिफरेंटली. इफ वी मूव देम इन द सेम पोजीशन लाइक दिस, they will look exactly identical like this. So from this we need to find out. अगर ये मैं मूव करती हूँ, थोड़ा ही टेढ़ा है तो ऐसे मूव करती हूँ, तो ये नीचे है. ये बाहर वाला ऐसा कर्व है वो नीचे है, वो तो ऊपर होना चाहिए, तो ये नहीं. ये ऐसे सीधा करो तो ये ऊपर जाएगा ऐसे और ये नीचे आएगा ऐसे. सेम लाइक दिस. सो दिस इज आंसर. यू चेक फॉर अदर्स. ये ऐसा पूरा घुमाओ तो ये नीचे आएगा, ये ऐसा वाला, और ऊपर वाला ऐसा आएगा. वैसा नहीं है. ये भी सीधा करो तो ये नीचे आएगा ऐसा वाला और ये ऊपर जाएगा. ऐसा नहीं है, ऊपर वाला ऐसा है, सी जैसा. करेक्ट. सो सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन. This is nothing but the movement of the paper
and identifying the position. सेम पोजीशन पे है, सेम डायरेक्शन में है, तो our answer is ready. It is nothing but visualization. Visualize करो, पेपर मूव करके it becomes easy to analyze, right? चलो आगे बढ़ते हैं. See, first figure, second figure. First figure, second figure. What are they? They have given similar figure. Why? Mirror image, water image is the main helping tool in your hand. ये क्या है? This is the mirror image of this. जो नीचे था वो ऊपर गया. लेफ्ट में ही रहा, राइट का राइट में ही रहा. So left right, this line was in the left and this sleeping line is in the right. So same way here, sleeping line is in the right and this is in the left. So left right has not changed, only bottom वाला part ऊपर गया है. So it is a water image. Similarly here, P का जो ये circle है, half circle, it is facing to the right. This also facing to the right. Only thing is it has come down. So this is a water image again. Same like this. This curve was facing to the left. This curve is also facing to the left. Left right has not changed. So all these three are water image. From here we need to find out the water image वाला कौन सा है. R का ये जो like P only, ये right में था, ये भी right में ही है. ये नीचे था. Moving to the right. Moving down to the right. Now it will go moving up to the right. Right and left will not change. Right का right में ही रहेगा. So this was moving down to the right. Now it will move up to the right. So this is the answer. This is the water image of this R. Okay? चलो आगे बढ़ते हैं. Here they have given certain closed figures and they have done some divisions inside. Okay. अभी outer जो figure है उसका sides में count कर रही हूँ. ये triangle है, so 3 sides. ये कितना है? Hexagon है, right? So 6 sides. ये कितना है? Square और rectangle, whatever it is, 4 sides. अभी अंदर, this is not a question of fraction that you need to have all the parts equal. This is not fraction. This is IT. So we may not be worried about the actual sizes of the pieces or the parts. Here how many pieces are there? 2. Here 1, 2, 3, 4, 5. 5 pieces. Here 1, 2, 3. 3 pieces. So observe, outer figure के sides है, उससे एक कम pieces है inside. So ये 3 वाला side था, I mean shape था, अंदर कितने pieces है? 2. So like that they have done. So we need to find out. इसके तो sides ही नहीं है. Outer circle doesn't have sides, so ये तो गया. ये कितना है? 1, 2, 3, 4. Pentagon है, so 5. अंदर कितना है? 1, 2, 3, 4. So this is the answer. But we'll check for this. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sides. 1, 2, 3. नहीं, ये 2 कम हो गए. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ये तो सेम है. So answer is this. So बच्चे लोग, इतना easy है. When you analyze it, to find out the answer, it is very easy. Analyze के लिए अपनी capacity बढ़ाना जरूरी है. Again I repeat, practice makes a person perfect. IT हो, maths हो, जितना solve करोगे बच्चे लोग, उतना confident feel करोगे at the time of examination. नहीं आता है, इसके लिए मैं नहीं करती, नहीं करता. That should not be the approach. We are there to assist you. Okay, even your teachers, I am there. You can put your queries in the comment section. I will definitely try to answer them. Okay, students, in case you like my videos, don't forget to share with your friends and comment on my videos if you like them. Like them, okay. And in case you have not yet subscribed to my channel, please do that so that you will enjoy all my videos in future as well. Right? Okay, students, study well and most importantly, very well said, enjoy studying. Bye.